इंसानों की लगभग 14 प्रजातियां हैं जो हमसे पहले इस धरती पर रह चुकी है। इन सब की अपनी अपनी अलग अलग खासियत थी, लेकिन बहुत सी खासियत ऐसी है। Number 1. Homo Habilis. Of all the Homo species, this is the one that is the least similar. सर, आप इंसान की प्रजातियों के बारे में क्या जानते हैं? आपका सवाल का में कोई जवाब नहीं है। ये इंसान तो ऐसे नहीं होते। अब इंसान की कुत्ता को बैठी गाय बिल्ली को गाय का पूछो, पक्षी का पूछो, कुत्ते बिल्ली का पूछो, तो मैं एक बात बताऊँ, अब इंसान की प्रजाति है ये तो सब ये क्या है, कोई प्रजाति नहीं है, सब एक शरीर है। सर, इंसानों की प्रजाति तो एक तरह की रहती है, सब अपन एक ही हैं। प्रजाति तो कुत्तों की देखी मैंने, बकरों की देखी, गाय बैल की देखी, इनकी रहती है प्रजाति। तो इंसानों की प्रजाति होती है। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गोरे लोग होते हैं, भूरे लोग होते हैं, काले लोग होते हैं। बाकी इंसान की प्रजाति यार, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ सर से, इसके बारे में जानता नहीं हूँ। ठीक है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसान की भी कई प्रजातियाँ हुई हैं हमसे पहले। अच्छा। तो आज हम इंसान की 14 प्रजातियों के बारे में जानकारी देंगे। इंसान की 14 प्रजाति? 14? तो मतलब ये सब अगर चीज दिखा रहे हो तो सब मैं देखना चाहूँगा, अगर 14 प्रजाति कौन सी है? अब इंसान की प्रजाति बता तो फिर देखनी पड़ेगी वो वीडियो। तो When we say humans, most people think we are the only ones or the only species that have ever walked this earth. But the truth is that we are not the only human species to have ever lived. We are just the human species that survived. Hence, we can call ourselves the surviving species. There are around 14 human species that have ever lived before us. All these have varying features, but there are some characteristics that they have left behind in us. So let us check them out. Number 1. Homo Habilis. Of all the Homo species, this is the one that is the least similar to Homo sapiens. It lived between 2.4 to 1.4 million years ago. It evolved in Africa and went extinct in the same place. They possessed some ape-like features such as long arms, a moderately prognathous face, and they had a cranial capacity slightly less than half of the size of modern humans. Some say that one population of Homo habilis might have evolved into the earliest undisputable human species, the Homo erectus. Number 2. Homo erectus. They lived throughout the Pleistocene period from 1.9 million years ago to most recently 143,000 years ago. Studies prove that Homo erectus originated in Africa and spread through India, China, Georgia, and then Java. They had a cranial capacity greater than that of Homo habilis, and they stood about 5 feet 10 inches tall, and they were extraordinarily slender with long arms and legs. It has been suggested that they may have been the first kinds to use rafts to cross oceans. Number 3. Homo Rhodesians. Fossils of this species showed that they had big teeth to chew plant materials, and most researchers believe that they lacked in speech and language skills, especially due to the small brain. The species was found to have stood over 3 feet tall and weighed about 110 pounds. Researchers say they could walk 2 feet on the ground, but most probably spent considerable time in trees, perhaps feeding, sleeping, and escaping predators. But besides all that, they believed it was a pretty close relative of Homo sapiens. Number 4. Homo Neanderthalensis. The Neanderthals were found to have appeared in Eurasia approximately 200,000 years ago. They are the most famous of all the extinct human species. That is probably the reason why the Big Bang Theory's team song was made based on them, or included them. They are sometimes labeled as the cousin of our species. That is because they had most of the features of modern humans. They looked the same, they used different tools for hunting, and wore symbolic ornamental objects. Number 5. Homo Floresiensis. They were believed to have lived 95,000 years ago to 17,000 years ago in Indonesia. Also known as the Hobbits, they were quite small in size, around 3.5 feet tall, with a tiny brain. Besides a short body and a small brain, they had unusually large and long feet, exactly like hobbits. There are some evidences that tell us that this species made stone tools and used them to hunt small elephants and large rodents. And they may be connected by folk memory to the Ibu Gogo myths of the Isle of Flores. Number 6. Homo Rhodesians. They are believed to have lived around 1.9 million years ago to 1.8 million years ago. They displayed less prognathism and a rounder brain case rather than a bunning brain case.
It was found that a वो male काफी Homo बड़ी। Rhodesians had massive teeth in compared to a female Homo Habilis, and it portrays a much larger brain अलग-अलग case, प्रकार के खोपड़ी but हैं, their अलग-अलग physical शक्ल build, weight and height are still unknown due to the scarcity कितने of बड़े-बड़े cranial इसके। fossils. Number 7. Homo Heidelbergensis. They lived on Earth between 700 and 200,000 years ago and was found that they emerged from Africa. The approximate height of the species was 5 feet 5 inches tall and weighed about 58 kilograms or slightly more than 120 pounds. They had a large brain case with a flatter face than modern humans. Findings show that they might have been the first species to have buried their dead and also were the first human species to adapt to colder climates and to build their own shelters to live in. Number 8. Denisova hominin, घर बना के also रहना known as चालू the कर दिया Denisovans, possibly throughout Eastern Asia between about 200,000 years ago and 50,000 years ago. Fragments of their fossils were found in the remote Denisova cave in the Altai Mountains in Siberia, a cave which has also been inhabited by Homo Neanderthalensis and Homo Sapiens, or the modern humans. Because so little is known about them, there is a slight reluctance in giving them any scientific name yet in regards to being a part of a Homo species. Number 9. Homo Naledi. Found to have existed in South Africa, but no official data has been published regarding the species' age. Although unofficial reports suggest it was alive between 300 and 200,000 years ago, they had strange mix of features with some parts of its skeleton undistinguishable from those of living people while other parts looked almost ape-like. They also had a brain a little bigger than that of a chimpanzee. Number 10. Homo Ergaster. This species existed and remained stable for approximately 500,000 years ago in Africa before disappearing from the fossil records about 1.4 million years ago. They had thinner bones, more protrusive faces and a lower forehead. This species had reduced sexual dimorphism, meaning males and females were almost the same in size. They were with a smaller face, a smaller dental arcade and a larger cranial capacity. Overall, their body was so much alike to a modern human's body. Number 11. Homo Antecessor. It actually means explorer and was known to have been present in Western Europe in Spain, England and France between 1.2 million years ago and 0.8 million years ago. They are about 5 feet 5 inches tall to 6 feet tall and males weigh approximately 90 kilograms. Studies say they might have been right-handed, which is a trait that makes the species different from other apes, and based on teeth eruption pattern, the researchers think that they had the same developmental stages as us Homo sapiens. Number 12. Homo Rhodesiansis. It was also named because they found it in northern Rhodesia, now Zambia. It was also known as the Rhodesian man. The skull was dubbed Rhodesian man at the time of the find, but it is now commonly referred to as the broken hill skull or the cupway cranium. They were found to have lived between 400 and 125,000 years ago. The skull found was from an extremely robust individual and was seen to have comparatively the largest brow ridges of any known hominid remains. Number 13. The Homo sapiens Idaltu, otherwise known as the Hertu man or the firstborn. They are the subspecies of Homo sapiens and lived approximately 160,000 years ago in Pleistocene Africa. They were discovered at the Hertobori near Middle Awash site of Ethiopia's Afar Triangle in 1997 by Tim White, but were first unveiled in 2003. They were said to have developed from the Homo Rhodesiensis and had heavier brow ridges. Number 14. Homo sapiens sapiens. Last, never the least, and the last surviving species of the genus, that's us. We, the modern humans or the wise men, are the only extant members of the hominin clade. We are characterized by erect posture, bipedal locomotion, larger complex brains and manual dexterity. Our species was said to have first appeared in Africa about 200,000 years ago and spread across the rest of the world, and none seems to have been able to compete with our technological and artistic sophistication. Anyway, thanks for watching guys. Please support our channel by liking our videos and subscribing to the channel. You can also tell us about your thoughts in the comments section. 14 प्रजाति, वो 14 प्रजाति हम थे, मतलब हमसे पहले 13 लोग गुजर चुके हैं, वो भी लाखों साल पहले। मतलब शायद उनके वो जो अवशेष जो मिले हैं हड्डियों के जरिए से, वही उससे अंदाजा लगा के पता है चीज़ के अंदर से। बाकी अपने आंखों से तो शायद किसी ने देखा नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कैमरे तुमरे कहाँ थे यार उस वक्त, ना कुछ शक्लें बनाने कुछ नहीं। ये देख के सब वाकई ऐसा महसूस हो रहा है कि आज जो हम हैं वो जो अभी अपने, लेकिन अपने से पहले इंसान कैसे था
कैसे कैसे बनता चला गया और कैसे कैसे वो होने वाला। आज जो जिस पोजिशन का अपन है वो सब ये देख के आगे बोलते चलेगा। कभी ये सोचा भी नहीं था कि इससे पहले कैसा वो आज क्या है। सर मैंने वीडियो में देखा है ज़्यादातर तो प्रजातियाँ फैली हैं, वो बनी है तो अफ्रीका की बनी, वो अपन भी उनके ज़्यादा अंदाज है, उनके वंशज हैं अपन। सर जहाँ तक मैं समझता था कि इंसान सिर्फ इंसान ही है, बाकी अलग अलग प्रजाति से जानवरों में है, शेर है ये, बाकी इंसानों के अंदर तो मैं बहुत देख के हैरान हो गया कि यार थोड़ा थोड़ा बंदरों से थोड़ा थोड़ा मेच खा रहा था। सर कुछ तो बंदर जैसे लग रहे थे, कई के सर बड़े थे, वो कई के हाथ लंबे थे, पैर भी लंबे थे, वो कई के आंखें भी बड़ी थी। कुछ तो बंदर जैसे लग रहे थे, वो कुछ अपने जैसे इंसानों जैसे लग रहे थे। सर एक बात मैंने और नोट की कि उन्होंने बताया कि पहले किसी का दिमाग छोटे थे, किसी के खोपड़ी छोटी थी, किसी का शरीर छोटे थे। और आज जो ये जो खेल है ये सब दिमाग का खेल है। आज जो दिमाग में आप देखो किसी ने ना बोला नहीं, किसी ने बंदूक में किसी की क्या बोला नहीं, और ये सब जो भी कुछ हुआ है और जो आज हो रहा है ये सब ये दिमाग से हो रहा है। और उस दुनिया के अंदर उन लोगों का दिमाग तो था लेकिन बहुत कम था या बहुत छोटा था। सर जी मैंने देखा एक प्रजाति ऐसी थी जो अफ्रीका से चली, इंडिया चाइना होते हुए जावा तक चली, तो शायद हो सकते हैं उनकी ही किसी प्रजाति में हम इंडिया में उनकी किसी नस्ल में हों। सर जहाँ तक कि मेरा मानना है जैसे जैसे दुनिया बदली, जैसे जैसे माहौल बदला, वैसे वैसे अपन अपने आप को ढालते गए, नहीं तो उनकी तरह अपन भी गायब रहते आज। सर जी इसके अंदर अपनों ने देखा यहाँ पर बैठे बैठे लाखों साल पुराने लोगों की बातें और जानकारी अपनों ने मिली। आने वाली नस्लें भी आएंगी तो हम शायद हो सकता उस आज से 1 लाख साल बाद 50,000 साल बाद तो वो प्रजाति कैसी हो, उनकी शक्ल सूरत कुछ पता हो सकता नहीं है। वो शायद वो हमारी बातें करेंगे, आज आप उनकी बातें कर रहे हैं तो वो हमारी बातें करेंगे कि हम इंसान ऐसे हुआ करते होंगे। है होमो इरेक्टस। बताया जाता है कि इंसानों की ये प्रजाति 19 लाख साल पहले से लेकर माना जाता है कि इंसान की ये प्रजाति 75 से 95,000 साल पहले इंडोनेशिया में थी। अब लिस्ट में आता है होमो हाइडेलबर्गेंसिस। माना जाता है कि ये लोग 2 लाख से 7 लाख साल पहले हुआ करते थे और ये भी शायद अफ्रीका से ही आए थे। इन्हें डेनिसिनियन के नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्टर्न एशिया में हुआ करते थे और 2 से 5 लाख साल पहले ये हुआ करते थे। अनऑफिशियल रिपोर्ट ये बताती है कि ये 2 से 3 लाख साल पहले हुआ करते होंगे। इनमें महिला और पुरुष दोनों की बॉडी का साइज और आकार एक जैसा हुआ करता था, यानी कि आप पहचान नहीं सकते कि कौन महिला कौन पुरुष है। पुरुषों का वजन 90 किलोग्राम के आसपास हुआ करता था और ज़्यादातर लोग सीधे हाथ से ही काम करते थे। और लिस्ट में जो ये आखिरी प्रजाति है ये हम लोग हैं, यानी कि आज का जो इंसान है वो यही है।